हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 के जो रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए टॉपिक 19 कवर कर रहे हैं जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस का। ठीक है, इसके अपन 25 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और कंप्लीट जो सीरीज है वो टिल एग्जाम तक जो अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, मैकेनिकल के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग साइंस के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट, सेकंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, थर्ड असेंबली ओनली एंड फोर्थ मटेरियल टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड conversion of raw material into finished product because manufacturing transform raw material for useful application. Next, second which manufacturing process involve material removal। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कास्टिंग, मशीनिंग, फॉर्गिंग एंड वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मशीनिंग। ठीक है, मशीनिंग शेप पार्ट बाय कटिंग और ग्राइंडिंग। नेक्स्ट, थर्ड द टर्म बैच प्रोडक्शन मीन्स। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोड्यूसिंग आइटम वन एट अ टाइम, सेकंड प्रोड्यूसिंग आइटम्स इन अ ग्रुप और बैचेस, थर्ड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्रोड्यूसिंग आइटम्स इन ग्रुप और बैचेस मीन्स बैचेस इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोसेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग इज सुटेबल फॉर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल लाइक केमिकल, सेकंड सिंगल कस्टम प्रोडक्ट, थर्ड असेंबली ओनली एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट continuous flow of material like chemical because process like chemical production use continuous flow. नेक्स्ट, फिफ्थ पाउडर मेटाग्लरी इज अ पार्ट ऑफ। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कास्टिंग, सेकंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड फैब्रिकेशन प्रोसेस एंड फोर्थ सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फैब्रिकेशन प्रोसेस बिकॉज पाउडर मेटाग्लरी फॉर्म नियर नीड शेप कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, सिक्स हॉट वर्किंग इन्वॉल्व्स। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्मिंग मटेरियल अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, second forming room temperature material, third only heat treating and fourth cooling material। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट forming material above recrystallization temperature because allows easier deformation with less resistance। Next, seventh which process is used to join metal by melting them along with the filler। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड रिवेटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट वेल्डिंग। इन वेल्डिंग बेस मेटल मेल्ट एंड फ्यूज। नेक्स्ट, एट कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो देखो ऑप्शन है पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू अ मोल्ड, सेकंड मशीनिंग सॉलिड मेल्ट, थर्ड joining part of adhesives and none of the above। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट pouring molten metal into a mold because casting shape complex geometrics। नेक्स्ट, नाइन्थ ग्राइंडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। तो देखो ऑप्शन है रफ शेपिंग, सेकंड फिनिशिंग एंड अचीविंग टाइट टॉलरेंस, थर्ड कास्टिंग एंड फोर्थ वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड finishing and achieving tight tolerance because grinding produce precise surface finish। नेक्स्ट, टेंथ इन मशीनिंग चिप फॉर्मेशन इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कटिंग ऑफ मटेरियल जनरेटिंग स्मॉल पीसेस, सेकंड फॉर्मिंग मेटल पार्ट, थर्ड कास्टिंग बाय मेल्टिंग एंड फोर्थ हीटिंग ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कटिंग ऑफ मटेरियल जनरेटिंग स्मॉल पीसेस मीन्स चिप्स आर अवे एक्सेस मटेरियल। नेक्स्ट, 11 इन सीएससी मशीनिंग प्रोग्रामिंग इज डन मोस्टली। तो देखो ऑप्शन है मैनुअल ओनली, सेकंड यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लाइक जी कोड, थर्ड बाय गेस वर्क एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लाइक जी कोड बिकॉज कंप्यूटर कमांड ऑटोमेट मशीनिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट, ट्वेल्थ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर मेनली यूज टू अल्टर। तो देखो ऑप्शन है शेप ओनली, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, थर्ड कलर ओनली एंड फोर्थ साइज ओनली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बिकॉज हीट ट्रीटमेंट इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट 13, which manufacturing process is known for mass production with high speed? तो देखो ऑप्शन है कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, बैच प्रोडक्शन एंड असेंबली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग सूट लार्ज वॉल्यूम प्लास्टिक पार्ट्स। नेक्स्ट 14, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक मेनली यूज। देखो ऑप्शन है कैड डेटा टू क्रिएट फिजिकल मॉडल क्विकली, सेकंड मैनुअल शेपिंग, थर्ड कास्टिंग एंड फोर्थ वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कैड डेटा टू क्रिएट फिजिकल मॉडल क्विकली। ओके, इट इनेबल्स क्विक मॉडल टेस्टिंग, डिजाइन इवोल्यूशन। वैसे देखिए जनरल नॉलेज के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस ऑन। तो देखो ऑप्शन है रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, सेकंड इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, थर्ड डिलेइंग प्रोडक्शन एंड फोर्थ इंक्रीजिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट इंप्रूव इफिशियंसी and quality. Next 16, which manufacturing layout is most flexible for product variety? तो देखो ऑप्शन है प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, असेंबली लाइन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रोसेस लेआउट बिकॉज इट्स सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोडक्शन विथ प्रोडक्ट वेराइटी। नेक्स्ट 17, Kanban card are used in manufacturing too. तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल इन्वेंटरी एंड प्रोडक्शन फ्लो, सेकंड मार्क डिफेक्टिव आइटम, थर्ड मेजर प्रोडक्ट पार्ट एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंट्रोल इन्वेंटरी एंड प्रोडक्शन फ्लो बिकॉज की टूल इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। नेक्स्ट 18, द टर्म एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मीन्स। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिमूविंग मटेरियल, सेकंड एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर टू बिल्ड पार्ट, थर्ड हीट ट्रीटमेंट एंड फोर्थ मशीनिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर टू बिल्ड पार्ट बिकॉज इट ऑल्सो कॉल्ड 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट 19, which method is used for material removal by electrochemical reaction? तो देखो ऑप्शन है EDM, ECM, AJM एंड लेजर मशीनिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इट रिमूव मेटल वाया एनोडिक डिसोल्यूशन। नेक्स्ट 20, टूल वेयर ड्यूरिंग मशीनिंग ऑकर्स मेनली बिकॉज ऑफ। तो देखो ऑप्शन है एब्रेसेशन एंड एडहेशन, कूलिंग ओनली, lubrication only and heating only. Correct answer है first abrasions and adhesions because it hardness difference cause wear mechanism. Next 21, casting defect includes. तो देखो ऑप्शन है porosity, shrinkage cavities, inclusions, all of the above. Answer है all of the above because it defect originate from metal solidification and impurities. नेक्स्ट 22, द पर्पज ऑफ एनलिंग इज ट्रू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज हार्डनेस एब्रप्टली, सेकंड सॉफ्टन मेटल एंड रिमूवेबल रिड्यूसल स्ट्रेस, थर्ड रिमूव सरफेस डिफेक्ट एंड फोर्थ इनक्रिप्ट मटेरियल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सॉफ्टन मेटल्स एंड रिमूव रिड्यूसल स्ट्रेस बिकॉज इट इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट 23, मेटल रिमूवल रेट इन मशीनिंग डिपेंड्स ऑन। तो देखो ऑप्शन है फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट एंड स्पीड, देन ओनली स्पीड, ओनली फीड रेट एंड टेम्परेचर अलोन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट एंड स्पीड बिकॉज इट डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट 24, जॉइनिंग प्रोसेस इंक्लूड्स। तो देखो ऑप्शन वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, थर्ड सेकंड मशीनिंग ओनली, थर्ड कास्टिंग एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग बिकॉज डिफरेंट मेथड टू परमानेंटली जॉइन पार्ट। नेक्स्ट 25, प्रोसेस प्लानिंग डील विथ। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सिलेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सीक्वेंस, सेकंड डिजाइनिंग टूल ओनली, थर्ड परचेस प्लानिंग एंड फोर्थ मार्केटिंग। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सिलेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सीक्वेंस बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर इफिशिएंट प्रोडक्शन। ऐसे देखे जनरल नॉलेज, मैकेनिकल, कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए
धन्यवाद।